Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good morning. I am Dr. Farah, and on behalf of PGMI, I welcome you all to this webinar. I hope everybody is doing great and ready to apply for the January 2024 induction. I hope I'm clearly audible to everyone. If yes, a few of you can please raise your hands so that we may proceed. Okay, thank you. This webinar will guide you about how to apply for the upcoming induction session January 2024 and how to fill the online application form. By the end of this session, you will be able to fill the online application form. So without wasting any time, we will proceed first of all to the induction policy. You can clearly see the induction policy on your screens. I will quickly go through only the important points of this policy. Later on, you can read it in detail. It is available on PGMI official website. So starting with the concept of uninhabited specialties. Uninhabited specialties are those specialties which are less populated, in which the number of trainees are less as compared to the demand of public and community. The list of uninhabited specialties is clearly given both for first and second fellowship. You can read the details later on. And the privilege which is given to the candidates who apply in these specialties is that PGMI allows NOC-based induction in these specialties. Provided that slots available in PGMI-affiliated hospitals are filled. On the next page, you can see that there is a criteria for induction in uninhabited specialties. The NOC-based induction will be allowed in these specialties within and outside KP in a way that training slots available in PGMI-affiliated hospitals shall not remain vacant. However, the arrangement of NOC will be the available responsibility of applicant, and NOCs will be accepted for induction as per merit. So you can see the specialties which are included in the list of uninhabited specialties. We have emergency medicine, radiotherapy, anesthesia, and so on and so forth. This is the difference between uninhabited specialties and other specialties. Moving on to the eligibility criteria, only KP domicile holders are eligible for open merit. इसके अलावा हमारे पास disabled person और minorities की भी कोटा हैं, but that are by default included in open merit. Non-KP domicile holders के लिए भी हमारे पास कोटा हैं. For example, the armed forces and civil servant spouse quota, which means that armed forces के जो personnel हैं या civil servants जो कि KP में on state duty हैं, they can also apply. उनके spouses के लिए कोटा हैं. इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, provided they are sponsored by their relevant governments. Eligibility criteria number 2 is that those who have passed FCPS Part 1 before 15th October and they appear in PGMI entrance test, which is to be held on 26th November, Sunday, for this session. जो exemption letter वाले लोग हैं, उनका जो exemption letter है, it should be issued by CPSP before the closing dates. Closing date जो है वो मैं आपको बता भी देती हूँ और एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन भी है, that is 9th November. अगर उनका exemption letter later on issue होगा, that will not be acceptable. Point C, for second fellowship, those applicants will be eligible whose FCPS-II results have been announced on or before the closing date, that is 9th November 2023. उनको जो कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर है या इलेक्शन लेटर है या जब आपका वाइवा क्लियर होता है जिनका, उनको एक ईमेल आती है, वो भी इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अटैच करनी है.
Point D is admission processing fee is ₹5,000 and it is non-refundable और इसकी फैसिलिटी जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अवेलेबल है थ्रू जैज़ कैश। वो अभी हम थोड़ी देर में ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो इट विल बी क्लियर टू यू। इसके अलावा हमारे पास फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए भी अपना क्राइटेरिया है और इनके लिए स्लॉट्स फिक्स्ड हैं। तो जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं फॉरेन कैंडिडेट्स दे शुड रीड द इंडक्शन पॉलिसी एंड अगर उनको कोई भी मसला हो तो वो पीजीआर सेक्शन आ सकते हैं पीजीएमआई में एंड आवर स्टाफ विल बी अवेलेबल टू गाइड देम। नेक्स्ट वी हैव डोमिसाइल पॉलिसी। बहुत सारे लोग इसमें गलतियां करते हैं तो इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड इट and listen to it carefully. Female candidates upon marriage shall assume domicile of her husband, meaning that after marriage, domicile of husband will be considered as domicile of the female candidate. इसका मतलब ये है कि when a female gets married, उसका अपना डोमिसाइल वैलिड नहीं होता और उसके जो हस्बैंड का डोमिसाइल है वही उसका डोमिसाइल कंसिडर होता है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ फीमेल and she is a KP domicile holder and she gets married to a Punjab domicile holder, then she is not eligible for this induction. But vice versa, if a female is a Punjab domicile holder and she gets married to a KP domicile holder, then she is eligible for this induction. Point B जो है that is permanent address on CNIC of the applicants must be that of KPK. It is not possible कि अगर किसी का डोमिसाइल केपी का हो उस पे एड्रेस जो है वो परमानेंट एड्रेस आउटसाइड केपी का मेंशन हो। So permanent address on the CNIC must be that of KPK. In case of married females, the permanent address on CNIC of the husband must be that of KPK. मैरिड फीमेल्स के लिए जो कंडीशन डोमिसाइल की है वही कंडीशन उनके लिए सीएनआईसी के परमानेंट एड्रेस पे भी अप्लाई होती है। पॉइंट सी इज मैरिड फीमेल्स कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रूव देयर मैरिटल स्टेटस विद डॉक्यूमेंट इशूड बाय नादरा, दैट इज सीएनआईसी, जिस पे हस्बैंड का नेम होता है और कंप्यूटराइज निकाहनामा जो कि नादरा की तरफ से इशू होता है। देन हमारे पास कोटाज हैं, डिसेबल पर्सन कोटा है और माइनॉरिटीज का कोटा है। ये जो हैं बाय डिफॉल्ट ओपन मेरिट में इंक्लूड होते हैं, इनको सेपरेट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है और इनके लिए स्लॉट्स फिक्स्ड हैं। ये जो मेंशन है ये आप डिटेल से रीड कर लें। नॉन केपी डोमिसाइल होल्डर्स के कोटा हैं, ये आप डिटेल से फिर रीड कर लें, ये मैं बता भी चुकी हूँ। पॉलिसी फॉर फॉरेन नेशनल्स हैं तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं दे शुड रीड इट वेरी केयरफुली। Then is very important thing. Next is criteria for award of merit marks. इसमें जो पेरिफेरी या हार्ड एरिया का एक्सपीरियंस है उसका वेटेज 5% है। MBBS या PDS प्रोफेशनल मार्क्स का जो वेटेज है दैट इज 20% एंड PGMI एंट्रेंस टेस्ट का वेटेज है 75%, विच मेक्स अ टोटल ऑफ 100%। हार्ड एरिया के का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसके बारे में आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि एज पर दी हेल्थ डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन नंबर, जिसका यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर मेंशन भी है, मैक्सिमम काउंटेबल एक्सपीरियंस शैल बी ऑफ 2 years। यानी कि अगर आपका सर्विस जो है किसी पर्टिकुलर पेरिफेरी या हार्ड एरिया में 10 years भी है या 20 years भी है तो एक्सपीरियंस जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 2 years का ही मिलेगा। इसमें जो मार्क्स हैं वो एरिया वाइज डिवाइड होते हैं। किसी एरिया को जो बहुत हार्डेस्ट होता है तो उसको 2 होते हैं, किसी एरिया को 1 होता है, किसी को 1.5 होता है, लेकिन मार्क्स जो हैं वो सिर्फ 2 years के ही मिलते हैं। और द सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड बाय DGHS KP। कोई और सर्टिफिकेट जो कि DHO MS या DMS की तरफ से इशू होगा उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे एंड दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिन लोगों ने पंजाब के हार्ड एरियाज में काम किया हुआ है, किसी NGO में काम किया हुआ है या आर्मी के किसी एरिया में काम किया हुआ है तो इन तीनों के मार्क्स नहीं मिलेंगे। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट that these marks will be given to only those medical officers, MOs या WMOs who are exclusive servants of provincial government of KP, and those who are working in hospitals managed by public-private partnership will not be awarded these marks. They should be very loud and clear. उसके बाद हमारे पास प्रोफेशनल मार्क्स कैलकुलेशन का तरीका लिखा गया है। बहुत लोग जो हैं वो ऑनलाइन कैलकुलेटर्स यूज़ करते हैं। इट इज़ बेटर दैट यू डू इट योरसेल्फ।
बहुत आसान तरीका है। हर एक प्रॉफ का जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है उसको आप डिवाइड कर लें टोटल मार्क्स से, एंड देन यू मल्टीप्लाई इट बाय 100, यानी कि आप उसका परसेंटेज निकाल लें हर प्रॉफ का, एंड देन यू एड अप ऑल द परसेंटेजेस एंड देन डिवाइड इट बाय 4 और 5 एज द नंबर ऑफ प्रॉफ्स मे बी। जो भी आंसर आएगा उसका 20% वेटेज आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट की कैलकुलेशन में यूज होगा। Then we have got format of PGMI entrance test. हमारे पास 3 टेस्ट कैटेगरीज हैं, मेडिकल स्पेशलिटीज, सर्जिकल स्पेशलिटीज एंड डेंटल। जो कि मेडिकल स्पेशलिटीज वाले लोग हैं वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपना टेस्ट कैटेगरी बहुत केयरफुली सिलेक्ट करें। अभी हम थोड़ी देर में ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, इट विल बी वेरी क्लियर टू यू कि आपकी जो टेस्ट कैटेगरी है अगर वो गलत हो गई तो इट विल नॉट बी वैलिड फॉर योर पार्ट 1, सो वेरी केयरफुली सिलेक्टेड। इसमें जो वेटेज है 20% बेसिक का है, बाकी जो जर्नल है दैट इज 50% एंड द रेस्ट आर मेंशन्ड। इंग्लिश लैंग्वेज 10%, बायो एथिक्स 10%, बेसिक बायो स्टेटिस्टिक्स 5% एंड कम्युनिकेशन स्किल्स 5%। डेंटल वालों का अपनी वेटेज है वो भी फिर आप लोग रीड कर लें। देन वी हैव गॉट सेकेंड फेलोशिप। जो लोग सेकेंड फेलोशिप में अप्लाई करना चाह रहे हैं शुड बी वेरी क्लियर दैट इनके जो मेरिट लिस्ट बनती है वो 3 चीज़ों से बनती है। नंबर 1 इज MBBS मार्क्स, नंबर 2 इज देयर पोस्ट फेलोशिप एक्सपीरियंस एंड नंबर 3 इज देयर पब्लिकेशंस। लास्ट टाइम भी काफी लोग जो है वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि इंटरव्यूज होते हैं या नहीं होते। देयर आर नो इंटरव्यूज। जब एक चीज पॉलिसी में मेंशन होती है तो वो बड़ी क्लियर एंड डिफाइंड होती है कि देयर आर नो इंटरव्यूज। MBBS का वेटेज 50% है। जो पोस्ट फेलोशिप एक्सपीरियंस है, अगर एक कैंडिडेट है सपोज अगर उसने फर्स्ट फेलोशिप जनरल सर्जरी में की हुई है और वो जाना चाह रहे हैं वेस्कुलर सर्जरी में एज ए सेकेंड फेलोशिप, तो अगर उनका एक्सपीरियंस जो है वो जनरल सर्जरी में 1 ईयर का है इन CPSP रिकॉग्नाइज यूनिट पोस्ट फेलोशिप एक्सपीरियंस, तो उसके 2 मार्क्स मिलेंगे फॉर 1 ईयर। और अगर वो वेस्कुलर सर्जरी में जाना चाह रहे हैं और उनका वेस्कुलर सर्जरी का एक्सपीरियंस इन CPSP रिकॉग्नाइज यूनिट 1 ईयर का है तो उसको 5 मार्क्स मिलेंगे 1 ईयर के लिए। आर्टिकल्स पब्लिकेशंस जो हैं इनकी इट मस्ट बी इन HEC रिकग्नाइज जर्नल। जो हमारे पास HEC की जो जर्नल रिकग्निशन सिस्टम है उसका लिंक जो है ऑनलाइन फॉर्म में अवेलेबल है। तो जो आर्टिकल्स आपके HEC रिकग्नाइज जर्नल में पब्लिश होंगे सिर्फ उन पे ही मार्क्स मिलेंगे एंड यू मस्ट बी फर्स्ट ऑथर फॉर दैट। इट इज़ वेरी सिमिलर टू योर एक्सपीरियंस। अगर आपका जनरल सर्जरी से रिलेटेड आर्टिकल होगा तो उसके 2 मार्क्स होंगे फॉर 1 पब्लिकेशन, और अगर वो वैस्कुलर सर्जरी से रिलेटेड होगा तो उसके 5 मार्क्स होंगे फॉर 1 पब्लिकेशन ओनली इफ यू आर फर्स्ट ऑथर एंड ओनली इफ द जर्नल इज HEC रिकग्नाइज्ड। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारे पास जो ट्रेनीज ऑलरेडी इनरोल्ड हैं FCPS में, enrolled with PGMI Peshawar before July 2023, only if they have resigned and notification of resignation has been issued before the closing date. इसमें बहुत सारे लोग जो हैं इनको मैं ये बात क्लियर करना चाहूंगी कि आपका रिजाइन करना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, उसको आपने फॉलो करना होता है एंड यू मस्ट बी हैविंग नोटिफिकेशन ऑफ एक्सेप्टेड रेजिग्नेशन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड दैट मस्ट बी इशूड बिफोर द क्लोजिंग डेट दैट इज 9th November 2023। इसके अलावा जो लोग हमारे पास इनरोल हुए हैं इन जुलाई 2023 यानी कि जो लास्ट सेशन था, trainees who got a seat allocated in final slot allocation or in subsequent placement orders, it is very loud and clear that they are not eligible for this session। चाहे उन्होंने अराइवल दिया है या नहीं दिया, चाहे उन्होंने उसी वक्त रिजाइन कर लिया या बाद में रिजाइन कर लिया, हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो इसी तरह से ही अपडेटेड है कि anybody who got a slot in July 2023 if he applies then he will be made not eligible by default। Next we have got trainees who are enrolled in MCPS/diploma। Number 1, they can also apply for FCPS exam if they have completed the training, यानी कि 2 साल का डिप्लोमा का एनेस्थीसिया का कोर्स था वो कंप्लीट कर लिया है और एग्जाम भी पास कर लिया, तो yes they can apply for this FCPS induction। Number 2, they have completed the training but have not passed the exit exam, they can also apply for this FCPS training but
Their stipend will be paid from the date they pass the exit exam. जो CPSP की notification है उसमें it is very clearly mentioned that FCPS and MCPS trainees are not allowed to join both the programs simultaneously. Therefore, MCPS trainees who want to join FCPS prior to passing MCPS examination will have to cancel their RTMC. Suppose एक MCPS का ट्रेनी है and he wants to join the FCPS program, लेकिन उनका MCPS का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो वो FCPS में उसी वक्त इनरोल होंगे जब वो MCPS की जो RTMC है उसको कैंसिल करेंगे. और एज पर पॉलिसी जब आप RTMC कैंसिल करते हैं किसी भी ट्रेनिंग के लिए, so you have to return all the amount of stipend paid. A few of the participants have raised your hands. I would like to clear that question answer session will be by the end. So please be patient. इसके अलावा हमारे पास ट्रेनिंग रिलेटेड मिसलेनियस रूल्स हैं. इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं. इसको आप डिटेल से अभी भी रीड कर लें और जब आपको स्लॉट अलॉट हो जाए तो उसको दोबारा रीड कर लें. इसमें ये है कि इस डिटेल्स को ना पढ़ने की वजह से आप लोगों से गलतियां हो जाती हैं और फिर उसमें पेनल्टी लग जाती है. तो इट इज़ बेटर टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड बाय रीडिंग ऑल दीज पॉइंट्स. By the end, in the end of this document, we have got a list of PGMI affiliated institutes, जो MTIs हैं, and there are also non-MTIs जिसमें हमारे पास CMHs हैं KP के. इसके अलावा हमारे पास private institutes हैं, RMI, Northwest, Peshawar Medical College, Ahmedabad International Medical College and Women Medical and Dental College. ये शेयर करते हैं स्टाइपेंड 50% KP की गवर्नमेंट देती है और 50% ये इंस्टीट्यूट्स को देते हैं. So this is the end of induction policy. Now we move on a step ahead and